So students, in yesterday's class we have seen series and parallel combination of resistance. In series combination of resistance, we have seen that resistors are connected end to end. One end of resistor connected to the another end of the resistor. This is R1, this is R2, this is R3, and the remaining circuit is connected to a battery which provides a potential through which a current flows, that is I. And here we apply a key. By the help of this key we can open or close the circuit, right? So we have seen that the resultant resistance R net for this arrangement is like this: R1 plus R2 plus R3. That means the net resistance due to this series arrangement is the sum of all the resistance. If this is 1 ohm, this is 2 ohm, this is 3 ohm, then the net resistance will be 1 plus 2 plus 3. This is 3 plus 2 5 and plus 1 6 ohm. Then you can see from here that the net resistance is always greater than each of these resistance in series combination, right? In series combination, net resistance is always greater than individual resistors, right? Now discuss the disadvantages of the series combination of resistance. That what is the limitation of series combination of resistance? That we use the parallel combination. In yesterday's class we have seen series combination as well as parallel combination. So what is the disadvantage in series combination of resistance? That we use parallel combination instead of series combination of resistances. So the disadvantage of the series combination of resistance is, see, this is a circuit, right? Here this is a resistance 1, or you can say not resistance, this is a bulb. This is a bulb, and in series you are connected a fan here. This is a fan, and this is your circuit. This is key. So this is a series combination. This is bulb and this is fan. Now as we know that to flow a current the circuit must be closed, right? What if the bulb get fused? What if the bulb get fused? If the bulb get damaged, then the circuit will be open from here because the bulb is got damaged. Now the current cannot be flow through the bulb, cannot be flow from the bulb. So this current I will be blocked here. It cannot propagate up to here because this bulb got damaged. So only the bulb get damaged, but due to this fan also stop working because current is not approaching towards the fan. As the bulb get damaged, this current is blocked by this bulb only, but fan is in its working position, is in working condition, but still it cannot get current. Why? Because the bulb get damaged. So in series combination, if one appliance, if one electric component get damaged, then other will also have to survive, because to flow a current the path must be closed. But if one component get damaged, then this path will break here, and if this path will break here, the current cannot propagate through ahead from the circuit. So this fan will also not work. In spite of that this fan is proper in working condition, but still it will not work properly because this damaged bulb block this current. So that's why this is the main disadvantage of the series combination कि एक component के खराब होने के बाद सारे component काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि ये खराब component उस current को block कर देता है. तो this is the main disadvantage of the series combination. Second disadvantage is, let's suppose कि आपको आपके bulb को ऑपरेट होने के लिए कोई आई करंट की रिक्वायरमेंट होती है. लेट्स से आपकी करंट को रिक्वायरमेंट है 5 एम्पियर की और फैन को रिक्वायरमेंट है 10 एम्पियर करंट की टू वर्क प्रॉपरली, राइट?
But in series combination, this is your bulb, this is your fan, and this is the series connection. This is voltage V. In a single circuit, in a single closed loop, current I will flow throughout the circuit, and this current इज आई ओनली. ऐसा तो नहीं है कि यही 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ जाके ये 10 की हो जाएगी. इसमें अगर ये 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो 5 एम्पियर की ही करंट फ्लो होती रहेगी. पर इस बल्ब को काम करने के लिए 5 एम्पियर की करंट की रिक्वायरमेंट है, इसको 10 एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट है फैन को. तो 5 एम्पियर की वजह से बल्ब तो काम कर लेगा 5 एम्पियर पे, बट फैन विल नॉट वर्क बिकॉज इट नीड्स 10 एम्पियर, बट दिस सर्किट प्रोवाइडर्स ओनली 5 एम्पियर. ऐसा तो नहीं है कि ये 5 एम्पियर जाते जाते यहाँ पे 10 एम्पियर का बन जाएगा तो फैन भी काम करना शुरू कर देगा. ऐसा नहीं है. एक सिंगल क्लोज लूप में करंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है. अगर ये 5 एम्पियर की करंट फ्लो करवा रहा है तो सिर्फ ये बल्ब को ही ग्लो कर पाएगा, फैन ग्लो नहीं कर पाएगा क्योंकि फैन को ग्लो होने के लिए 10 एम्पियर की रिक्वायरमेंट है. सो दिस इज द सेकेंड डिसएडवांटेज ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन कि एक सर्किट में फिक्स अमाउंट का करंट फ्लो होता है और जो अप्लायंस उस फिक्स अमाउंट के करंट को सपोर्ट करते हैं वो तो प्रॉपरली वर्क करते हैं, पर जो उस प्रॉपर अमाउंट ऑफ करंट को, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो सही होने के बावजूद, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन होने के बावजूद भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं. सो द टू डिसएडवांटेज ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज कि अगर एक कंपोनेंट खराब हो गया तो बाकी कंपोनेंट सही होंगे फिर भी वो काम नहीं कर पाएंगे. वाई? बिकॉज द पाथ गेट ब्रोक. सेकेंड डिसएडवांटेज कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का अमाउंट हमेशा सेम रहता है तो फिक्स अमाउंट की करंट सब अप्लायंस को ऑपरेट नहीं कर सकती. किसी को 5 एम्पियर की रिक्वायरमेंट होगी, किसी को 10 एम्पियर की रिक्वायरमेंट होगी. तो 5 एम्पियर वाले तो विल वर्क प्रॉपरली बट 10 एम्पियर वाले विल नॉट वर्क प्रॉपरली. तो these are the two disadvantages of the series combination of resistance. That's why we study parallel combination of resistances. पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हमने देखा था कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ resistors the arrangement is like they are the 2 points. This is the circuit and we apply a battery with the help of a key. This is a key, this is the voltage, plus terminal, negative terminal, and by this and A and B 3 resistors are connected over here. This is R1, this is R2 and this is R3, right? So we get the net resistance. R net is 1 upon R1, 1 upon R2, 1 upon R3. That's what we get, net resistance due to the parallel combination. So as you can see here, if this is 3 ohm, this is 3 ohm and this is 3 ohm resistor, then by solving 1 upon 3 plus 1 upon 3 plus 1 upon 3, this will be R net. So after solving this 3 LCM, 1 plus 1 plus 1, 1 upon R net. So R net will be 3 upon 3. That means R net equal to 1 ohm. So you can see here that in this case the net resistance is 1 ohm. That means for the parallel combination of resistor, the net resistance R net is always lesser than the individual resistors. If this is 3, 3, 3, then the net resistance is 1. If it is like 3, 6 and 5, then the net resistance R net will be less than 3. जितना कम resistance इसमें है उससे भी कम आपको net resistance मिलेगा. That's the main application of the parallel combination of the resistors. That's why हम इसको minimum effective resistance circuit भी बोलते हैं. minimum effective resistance circuit क्या बोलते हैं? minimum effective resistance सर्किट. वाई? क्योंकि जो नेट रेजिस्टेंस हमको मिलता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टर से कम मिलता है. अगर आपका यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 ओम का है, 6 ओम का है, तो जो नेट रेजिस्टेंस मिलेगा वो फॉर श्योर 3 ओम से कम ही मिलेगा. ठीक है. सो नेट रेजिस्टेंस विल ऑलवेज बी द लेसर देन द मिनिमम इंडिविजुअल रेजिस्टर. लेकिन सीरीज में क्या था? सीरीज में नेट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टर्स. ओके. अब इसकी एडवांटेज क्या हुई? एडवांटेज ये हुई कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम सर्किट कनेक्ट कर रहे थे तो एक कंपोनेंट के ख़राब होने की वजह से बाकी सब काम करना बंद कर दिए थे. लेकिन इन दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आपने यहाँ पे बल्ब ऐड कर दिया, यहाँ पे आपने फ़ैन ऐड कर दिया,
और यहाँ पे आपने कोई दूसरा प्रेस कनेक्ट कर दी, आयरन, राइट। अब ये करंट इसमें आई फ्लो हो रहा था, ये बैटरी थी, ये पोटेंशियल की वजह से करंट आई फ्लो हो रहा था. नाउ दिस करंट आई विल गेट स्प्लिट हियर, दिस इज I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I3. इफ़ दिस बल्ब गेट डैमेज तो ये I1 ब्लॉक हो जाएगा, पर I1 के ब्लॉक होने की वजह से क्या I2 पे फ़र्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि ये वाला बल्ब फ्यूज़ हुआ है ना. ओके, लेट इट बी, ये सर्किट से हट गया, पर अभी भी तो हमारा सर्किट कंप्लीट है, तो ये I2 करंट तो अभी भी फ्लो होगा, यानी कि फ़ैन विल वर्क, स्टिल वर्क. और ये जो अगर फ़ैन भी ख़राब हो जाता है तो I2 करंट फ्लो नहीं होगा, पर I2 करंट फ्लो नहीं होगा तो क्या हुआ, दिस करंट I विल फ्लो लाइक दिस and it will get a closed path, so press will still working, right. So that's how parallel combination saves the life, कि अगर एक कंपोनेंट खराब हो गया तो बाकी सब कंपोनेंट काम करना बंद नहीं करते, still they are on their working conditions. So this is the main advantage of the parallel combination of the resistances, and that's why हम home appliances में, घरों में जो कनेक्शंस करते हैं वो करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, नॉट सीरीज कॉम्बिनेशन. और जो सीरीज कॉम्बिनेशन का दूसरा एडवांटेजेस था कि अगर एक बल्ब को चाहिए 5 एम्पियर और फैन को चाहिए 10 एम्पियर करंट, तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था सीरीज कॉम्बिनेशन. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर इसको 5 एम्पियर की करंट चाहिए तो उसको 5 एम्पियर की करंट मिल जाएगी, क्योंकि दिस इज I एंड I गेट स्प्लिट फ्रॉम हियर I1, I2 एंड I3. I1 कैन बी 5 एम्पियर, I2 कैन बी 4 एम्पियर, I3 कैन बी 10 एम्पियर. तो जिसको 10 एम्पियर का करंट चाहिए उसको यहाँ कनेक्ट कर दो, जिसको 5 एम्पियर का करंट चाहिए उसको यहाँ कनेक्ट कर दो, और जिसको 4 एम्पियर का करंट चाहिए उसको यहाँ कनेक्ट कर दो. So that's how in parallel combination the disadvantages of the series combination will get removed. That's why parallel combination of the resistors are very useful in general life.